Now please pay attention. 3x plus 2 equal to 8. What kind of equation is this? 3x plus 2 equals 8. What kind of equation is this? It is a linear equation. Clearly, it's a linear equation because the highest part of the variable is 1. Now, if we try to solve this equation, how many solutions will we have? How many solutions will we get for this equation? Only one. And that solution will be, what will be the value of x here? 3x equal to 6, x is equal to 2. So that is one simple way to, that is one simple conclusion that we can draw by the help of this particular example, that in case of linear equation, there will be only one value of x which will satisfy the equation. Can we say that? That is the reason that we can say that the solution of this equation will be unique, because no other value of x will satisfy this equation, right? This is the first thing to be understood about solution of linear equation. I hope the meaning of solution of any equation is clear to you. What is meant by solution? Desired value. Result. That means the value of x, which will, the value of the variable which will satisfy the equation. That is the solution of equation. In case of linear, the solution is unique. Now, why we needed to discuss this? You people know that is how to draw the graph of trigonometrical functions, especially if I talk about sine. The graph of sine function is, in one cycle, it is like this. In another cycle, it will be like this. That is not like, it will be equal. Maximum value 1, minimum value -1. If we extend it further, it will be somewhat like this, right? Now, if I draw a line parallel to x-axis in this, a line parallel to x-axis, the distance between parallel lines always remains same. We know this. Now, in general, if I need to write down the coordinate of this point, what will be the coordinate? General coordinate. X1 and y1. X1, y1, coordinate of this point. What about this point? X2, 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 y. What about coordinate of this point? X3, y. What about coordinate of this point? X4, y. Coordinate of this point? X5, y, and so on. Now try to connect it together. Values of x are different, x1, x2, x3, because definitely the value of x would be different. X1, x2, x3, x4, x5, they are different. But the value of y is same in all the cases. Y is the image or pre-image. Image. X1 is the pre-image. That means, can we say that this function will be in the form of y equal to sine x? If we write this function as y equal to sine x, all these values x1, x2, x3, x4, x5 are they going to satisfy this equation? अगर हम x की जगह x1 पुट अप करेंगे, y की वैल्यू तो y रहेगी ना. अगर हम x की जगह x2 पुट अप करेंगे तो भी y की वैल्यू सेम रहेगी. One simple conclusion that we can draw by the help of this graph and by the help of the discussion that we just did, that in case of trigonometrical equations, if it is trigonometrical function or trigonometrical equation, more than one value of x will satisfy the equation. And that is why we say that not just one value, but multiple values satisfy a trigonometrical equation or a trigonometrical function. अभी तक अगर कुछ समझ नहीं आया है तो इस पॉइंट से अब ध्यान देना. हम लोगों ने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे लास्ट ट्रिग्नोमेट्री में, जो हम लोगों ने किए थे, that all pi of sine are 0, even pi of cos are, odd pi of cos are -1.
Try to connect it now. So if I write sin x is equal to 0, this is the equation. Equation के आगे लिखा है solve sin x is equal to 0. This means that we need to find the value of x. Now what will be the value of x in this case? 0. और कोई value satisfy कर सकती है? नहीं. If I write pi, what will be the value of sin pi? 0. Satisfy तो कर रही है. If I write 2 pi, value satisfy कर रही है. If I write 3 pi, again the value is satisfying. If I write 4 pi, then also. Are you getting this point? That means in place of x, if you write any one of these values, this equation will be satisfied by all these points. So we can easily conclude that in case of trigonometrical equation, there is more than one value of x which will satisfy the equation. That is why we say that there are two types of solution in case of trigonometrical equation. And next topic is solution of trigonometrical equation. So when we talk about solution of trigonometrical equations, first of all, we need to understand that there are two types of solution of trigonometrical equations. बहुत simple concept है. The first, that is the name of the topic, is solution of trigonometrical equation. There are only two types of solutions. We'll first of all discuss the first one. This is principal solution. Now, what is meant by principal solution? The solution which lies between 0 to 360 degrees. That means the solution which belongs to the first cycle of the quadrant concept. You know that first cycle of quadrant concept is 0, 90, 180, 270 and 360. So the solution which belongs to this range is known as the principal solution. एक बहुत interesting सी बात. All of us are aware of the quadrant concept now, that in the first quadrant all the values are positive, second quadrant sine is positive, third quadrant tan is positive, and fourth quadrant cos is positive. This is the thing. Now, first all are positive. Second, only sine is positive. Can we simply conclude that each value is positive or negative in exactly two quadrants? If I ask you that what are the two quadrants in which cos is positive? First and fourth. What are the two quadrants in which sine is negative? Third and fourth. Sine is negative. Third and fourth. What are the two quadrants in which tan is negative? Second and fourth. What are the two quadrants in which the value of sine is positive? First and second. So because each t ratio is either positive or negative in exactly two quadrants, that is the reason there are always two principal solutions. Is it clear? There are always two principal solutions. So like this example will make it in fact crystal clear. If sin x is equal to say root 3 by 2. साइन के टेबल में रूट 3 by 2 कब आएगा? 60 डिग्री. दैट मींस 5/3. अब पॉजिटिव है तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमने डायरेक्टली कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो साइन ये रूट 3 by 2 हो सकता है ना, बिकॉज साइन इज पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट आल्सो. तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस 5/3. वाई पाई माइनस 5/3? क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट साइन विल बी पॉजिटिव, फंक्शन विल नॉट चेंज, इट विल बी द सेम एज sin pi/3. दिस इज द रीजन दैट वी हैव राइट इट इन दिस फॉर्म, राइट? सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव गिवन है तो हमें ये देखना है कौन कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है और उनमें एडजस्ट करना है. इस एडजस्टमेंट के लिए ये चीज आपको बहुत काम आएगी. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू एडजस्ट करनी है तो इट डज नॉट नीड्स एनी एडजस्टमेंट, उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में एडजस्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में एडजस्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा पाई प्लस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एडजस्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 2 पाई माइनस. मेरे मन में एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट में एडजस्ट करें पाई माइनस, हम पाई अपॉन 2 प्लस भी तो कर सकते हैं, तब भी तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फंक्शन चेंज हो जाएगा. So that is why we are doing it on the basis of horizontal axis. Very good, Oli.
Clear to all? So whenever we need to make an adjustment, we always do it on the basis of horizontal axis. First में direct, second में pi minus, third में pi plus और fourth में 2 pi minus. Now look, तो ये हमने adjust कर ही दिया था, तो already x equal to pi upon 3 and this will be equal to 2 pi upon 3. Is it clear? इसको आप मैपिंग से बहुत इजीली समझ सकते हो. देखो यहाँ पर हमें sin x फंक्शन की वैल्यू √3/2 गिवन है, √3/2. और किन किन वैल्यूज के लिए ये √3/2 आ रहा है? पाई अपॉन 3 और 2 पाई अपॉन 3. दैट मींस sin पाई अपॉन 3 भी √3/2 है और 2 पाई अपॉन 3 ये भी √3/2. इज इट क्लियर? अच्छा, एक छोटी सी चीज और बताओ मुझे. Now you have seen that these two pre-images are connected to the same image. What kind of function is sin? हमने types of functions पढ़े थे ना? Many one. This is a many one function because multiple values are satisfying this equation. Clear? In fact, all t ratios are many one function. They are not one one. They are many one. Note it down now, please. थोड़ा सा समझ आया? Now look for this example. Question will be like this: solve for principal solution. They will mention always what type of solution they need. Solve for principal solution. Say 10x is equal to 1. अब tan के टेबल में 1 कब आएगा? pi/4. पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्टली. और कौन से क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा? थर्ड. हाउ टू एडजस्ट वैल्यू इन द थर्ड क्वाड्रेंट? pi plus. So what will be the value of x? Pi upon 4 or 5 pi upon 4. That's the solution. Got this? Please ask your doubts. Again, solve for principal solution. Look, cos x is equal to minus 1 upon √2. So cos x is equal to minus, that is cos 1 upon √2, 45 degree. That means 5 upon 4. But the problem is this negative sign, मतलब वैल्यू नेगेटिव आ रही है. पहले तो हमने डायरेक्टली उसको लिख लिया किस वैल्यू के लिए वो एप्रोप्रिएट है. Then after that the sign. Now cos is negative in which two quadrants? Second and third. Second में एडजस्ट करने के लिए पाई माइनस और थर्ड में एडजस्ट करने के लिए so value of x will be equal to 3 pi upon 4 and 5 pi upon 4. Is it clear with the negative cases as well? When is tan 1? 45 degrees, that is pi by 4. Now when is tan negative? Second and fourth. How to adjust it in the second quadrant? Or so x will be equal to 3 pi upon 4 or x equal to 7 pi upon 4. This is the principal solution. Sin 3x equal to minus 1 upon 2. Watch out carefully. So this is sin 3x equal to minus 1 upon √2. So first of all, 1 upon √2. Now this happens at pi upon 4. Now sin is negative in which quadrant? Third and fourth. To adjust this value in the third quadrant, it will be pi plus pi upon 4. Or to adjust this value in the fourth quadrant, it will be 2 pi minus pi upon 4. So from here, 3x will be equal to 5 pi upon 4.
From here, 3x will be equal to 7 pi upon 4. So x will be equal to 5 pi upon 12, or x will be equal to 7 pi upon 12. That's the solution. Got this? Now look. The next type of solution is, यहाँ में efforts लगाना पड़ेगा. General solution. First of all, let's try to understand the meaning of general solution. Sin x is equal to 0. What are the various values of x that will satisfy this equation? 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, and so on. और कोई value? और कोई value? Minus pi, minus 2 pi, and so on also. Because sine minus pi will be minus sine pi. Sine pi is 0, so minus 0 will still remain to be 0. Now, can you see that all these are actually integral multiples of pi? When I say integral multiples, that is all these are integers. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, and so on, along with the pi. So can we say that x should be equal to n pi, where n belongs to z? Right? So what have we done is from this, what that is focus on the transformation that we've done from this step to this step. In this step, it was written in the expanded notation. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. So we have generalized this. Pay attention on the word that I'm using. I have generalized this, that this can be in short written as n pi because it is true for all integral values of n. That is when n belongs to z. Right? So अब इस solution को, that is the solution which is written in short in generalized form, is known as general solution. What do you think? What would be one common thing in all the general solutions? Pi, देखो pi जरूरी नहीं है, जैसे है ना, pi can change. Or is one most important thing that will be common in all the general solutions? N belongs to integer, definitely. This will be there. एक और चीज common होगी. Before n belongs to integer. No. It will be written in terms of n. उसके बाद ही आएगा ना n belongs to integer. That is, all general solutions would be written in terms of n. तो अगर हमने directly solution लिखना है, principal solution लिखना है, that will belong to 0 to 360 degree. अगर हमें general solution लिखना है, तो that will be in terms of n. Right? अब आप देखो, यहाँ हमें थोड़ा सा याद करना. And just for the sake of simplicity, it has been divided into 3 subcategories. There are 3 types of general solution. We call them zero solution, alpha solution, and squared solution. What do we call them? Zero, alpha, and squared. Now, first of all, zero solution. आपको इन तीनों, that is जो 3 equations है, इन्हीं से clear हो जाएगा why we call them zero solution. Sin theta equal to 0. Cos theta equal to 0. Clear हुआ? Tan theta equal to 0. Sin theta equal to 0 ये तो अभी हमने डिस्कस भी किया था. That is, theta will be equal to n pi, where n belongs to z. N should be an integer. देखो यहाँ पर इसको zero solution इसलिए बोल रहे हैं because all the t ratios are equal to 0 over here. Now cos theta equal to 0, so theta will be equal to 2n plus 1 into pi upon 2, where n belongs to z. Actually, whenever there are odd multiples of pi upon 2, then the value of cos is 0. Like cos pi upon 2, cos 3 pi upon 2, cos 5 pi upon 2. जितने भी odd multiples हैं pi upon 2 के, उनके लिए cos की value 0 होती है. तो 2n plus 1 into pi upon 2. Tan theta equal to 0. See, tan equal to sin upon cos. तो जो रिजल्ट साइन के लिए है वही रिजल्ट tan के लिए हो जाएगा. तो यहाँ पर भी आएगा थीटा इक्वल टू n pi, where n belongs to z. तीनों टाइप के जनरल सॉल्यूशंस क्लियर हो. नाउ अल्फा सॉल्यूशन.
यही सबसे इंपॉर्टेंट है और थोड़े से आपको मतलब इसमें याद करने की जरूरत पड़ेगी. दिस इज साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा. दैट इज अब इक्वल टू जीरो नहीं है, इक्वल टू अ नॉन जीरो वैल्यू. Cos theta equal to cos alpha, and last one tan theta equal to tan alpha. Now sin theta equal to sin alpha, theta will be equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha, where n belongs to z. Cos theta equal to cos alpha is theta equal to 2n plus 1, 2n pi rather, 2n pi plus minus alpha, where n belongs to z. Tan theta equal to tan alpha, theta equal to n pi plus alpha, where n belongs to z. सबसे इजी है स्क्वायर्ड सोल्यूशन. देखो स्क्वायर्ड सोल्यूशन सबसे इजी क्यों है? दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा. तीनों में कोई भी हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. In all the three cases, theta will be equal to n pi plus minus alpha, where n belongs to z. तीनों के लिए same solution, n pi plus minus alpha. So these are the three types of principal solution. Sorry, general solution. बस एक मिनट. इसमें एक चीज हमें याद रखनी है. The principal solution is written on the basis of primary principal solution. अब हमने principal solution तो पढ़ा था. What is meant by primary principal solution? अगर आप notice करो, for all the principal solutions there were two values. Because, and why there are two values? Because each p ratio is positive or negative in exactly two quadrants. ये जो दोनों values आएंगे, obviously दोनों अलग अलग आएंगे. तो इसमें से एक वैल्यू स्मॉलर होगी, एक वैल्यू लार्जर होगी. द स्मॉलर वैल्यू इज नोन एज द प्राइमरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो जब भी हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज टू बी डन ऑन द बेसिस नॉट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन. सॉरी, दिस इज जनरल. तो जब भी हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्लीज मेक अ करेक्शन हियर इफ यू हैव ऑलरेडी नोटेड. दिस शुड बी जनरल. So these are the things that you need to note down before. But before that, please ask your doubts. Anything which is not clear. Please wait, stop writing. And here. 2n plus 1 into pi upon 2. क्या बेटे? हाँ, इवन में एक्चुअली क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आ जाएगा, तो फिर वो डिपेंड करेगा कि पाई की वैल्यू इवन है या ऑड है. तो अगर पाई की वैल्यू इवन है तो देन इट विल बी +1, ऑड है तो देन इट विल बी -1. दिस इज ट्रू ओनली फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन 2. है तब तो ऑब्वियसली वही वाले. If the question is silent, there is no specified thing in the question, then we always find the general solution. Look for this example. Like they have written only solve, they have not specified which type of solution. They'll find only the general solution. But general solution के लिए principal solution find करना mandatory है. तो दोनों चीजें automatically हो जाए. देखो आप, sin x is equal to say for example -1. sin x equal to -1. पहले आपको कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी, कौन सी कैटेगरी का सोल्यूशन है वो, जीरो, अल्फा या स्क्वायर्ड. इक्वल टू जीरो नहीं है तो जीरो नहीं हो सकता, स्क्वायर्ड टर्म्स नहीं है तो स्क्वायर्ड नहीं हो सकता. तो एक ही बेचारा बचा, दैट इज अल्फा सोल्यूशन. साइन के टेबल में 1 कब आएगा? 5.2 90 डिग्री, राइट. अब साइन नेगेटिव है. साइन नेगेटिव किन दो क्वाड्रेंट्स में होगा? थर्ड एंड फोर्थ. कौन से क्वाड्रेंट में प्राइमरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा? थर्ड में, फोर्थ में? प्राइमरी इज द स्मॉलर वन, तो थर्ड में आएगा. एंगल्स इंक्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू स्मॉलर होगी. तो वी डोंट हैव टू एडजस्ट इट इन बोथ द क्वाड्रेंट्स, वी हैव टू एडजस्ट इट ओनली इन द थर्ड क्वाड्रेंट. सो दिस विल बी sin x is equal to sin pi plus pi upon 2. So sin x is equal to sin 3 pi upon 2, right? अब sin x equal to sin alpha, sin theta equal to sin alpha, क्या सोल्यूशन था?
theta equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. So therefore, x is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. Alpha is 3 pi upon 2, where n belongs to z. That is the value. थोड़ा सा समझ आया? एक बार recap, just a quick recap. What we do, सॉल्व करना था sin x इक्वल टू -1 गिवन था हमें यहाँ पर 1 5.2 पर आएगा, फिर नेगेटिव को एडजस्ट करने के लिए क्योंकि साइन नेगेटिव होगा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो वी एडजस्टेड इट ओनली इन द थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज़ प्राइमरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट. इसको सिंपलीफाई किया, sin x इक्वल टू sin 3π/2, फिर sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा वाला रिजल्ट यूज कर लिया, यहाँ पर वैल्यूज पुट अप कर दी. इन रिजल्ट्स को यूज करना बहुत सिंपल है. So that's the best thing in trigonometrical equation. Note it down, please.